Meetings play a very important part in the business world. Important decisions are made during the meetings. People are promoted, they are demoted, they are hired and even sometimes they are fired. तो अगर आप मीटिंग के एटिकेट्स को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में जितने भी सेंटेंसेस हैं आपको उनके साथ वेल एक्वेंटेड, वेल फेमिलियर होना पड़ेगा। और उसका सिंपल एक टेक्निक है कि आप इन सब सेंटेंसेस को मेरे साथ बार बार बोलकर प्रैक्टिस करें, लिस्ट बनाएं। whenever you have an important meeting to take care of, do watch this video again and practice on all these sentences. So when next time you attend a meeting, you do not sound dull and unconfident. Rather, you turn up as a confident, active, positive participant. Let's begin. Bonus tip, at the end of the video, even I will be sharing a sample text message with you which you could circulate to your group members or to your team members whenever you want to call for a meeting. So when you start a meeting, it is very important that you acknowledge all the group members. So you could appreciate them saying, "Hi everyone, I appreciate that you could come at such a short notice." मतलब आप इतने छोटे से शॉर्ट नोटिस में इस मीटिंग के लिए आ पाए। "Hi everyone, I really appreciate you all could come for the meeting at such short notice. I appreciate your attendance to this meeting. I appreciate your attendance to this meeting. Please join me in welcoming Mr. Smith. Please join me in welcoming Mr. Smith." अगर आप अपनी मीटिंग में आपके पास कोई सीनियर अथॉरिटी हैं और आप उनको स्पेशल फील कराना चाहते हैं या फिर आप उनको प्रेजेंटेशन कंडक्ट या डिलीवर करने के लिए बुलाना चाहते हैं तो अपना आप ग्रुप मेंबर्स से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सो एवरीवन प्लीज़ जॉइन मी इन वेलकमिंग मिस्टर स्मिथ। और यू कैन से, "I would like to extend warm welcome to Mr. Smith. I would like to extend warm welcome to Mr. Smith." Then you can talk about the designation the person holds in the company. Like, "I would like to extend warm welcome to Mr. Smith, the CEO of the company." So Mr. Sharma will be taking the minutes today. Taking minutes means you are assigning a responsibility to someone who would be writing down all the important points discussed in the meeting, so it could be referred later on. Okay, so you could assign one person for that. So you will say, "Okay, I would like Mr. Sharma to take the minutes. I would like Mr. Sharma to take the minutes. I have received apologies for absence from Samantha. I have received apologies for absence from Samantha." अगर कोई ग्रुप मेंबर मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया है और उसका अपॉलॉजी टेक्स्ट आपके पास आया है तो आप ग्रुप मेंबर्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि समंथा विल नॉट बी एबल टू अटेंड द मीटिंग टुडे बट शी हैज़ अपॉलोजाइज्ड फॉर दिस। द पर्पस ऑफ टुडेज मीटिंग इज़ टू डिस्कस ABC थिंग। द पर्पस ऑफ टुडेज मीटिंग इज़ टू डिस्कस दिस एजेंडा। एग्ज़ाम्पल, आपने मीटिंग होल्ड करी है ये डिस्कस करने के लिए कि आप कस्टमर सर्विसेज को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर ये डिस्कस करने के लिए कि हम अपनी सेल को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। तो आप मीटिंग के स्टार्टिंग में अपने ग्रुप मेंबर्स को एक्नॉलेज करने के बाद कहें, "So the purpose of today's meeting is to discuss how can we improve our after sales services." मतलब सेल करने के बाद जो सर्विसेज होती हैं, how can we improve on that? First of all, we will be talking about this agenda. After that, we will be talking about this B agenda. And if time allows us, we will move further discussing this problem. So your audience or the group members must know that what they should expect out of this meeting or what are the main topics which we are going to brainstorm. Brainstorm मतलब आप अपने माइंड को किन किन आइडियाज़ के लिए ग्रुप मेंबर्स को ब्रेनस्टॉर्म करना है उन्हें ये बताने के लिए आप एक सीक्वेंस में बता सकते हैं कि मीटिंग के एजेंडा के क्या टॉपिक्स हैं। So you will say, so today first of all we will talking about A, agenda. Then we will be talking about B, and if time allows us, we will discuss how we can solve this problem. Or if time allows us, we will move further discussing ABC thing. So ABC, XYZ, all this depends upon the topic you are gonna have meeting on.
That's a valid point, but we will discuss about it in detail at a later date. That's a valid point, but we will discuss about it in detail at a later point. समटाइम्स कुछ ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं मीटिंग में ब्रेनस्टॉर्मिंग के टाइम, जब आप सब टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं पर उस टॉपिक का मेन एजेंडा नहीं होते, उस मीटिंग का मेन टॉपिक नहीं होते। तो उस टाइम पर आप जो भी पर्सन ग्रुप मेंबर क्वेश्चन रेज करता है, आप उन्हें कह सकते हैं दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन और दैट्स अ वैलिड पॉइंट, बट वी विल डिस्कस अबाउट इट इन डिटेल एट अ लेटर डेट, मे बी इन सम another meeting. I think we need to leave this topic for the time being and move further discussing about XYZ thing. Sometimes one topic is exaggerated because everyone has their own ideas to present on that particular subject. So at that time, just to make sure that meeting is going in a right flow, you can bring everyone's attention back saying कि मुझे लगता है कि हमें we should leave this topic for the time being. For the time being मतलब कुछ समय के लिए, कि हमें इस टॉपिक को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि we have to move further discussing about the more important concerns. हमें अभी move further मतलब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने के लिए. कंप्लीट सेंटेंस. आई गेस, आई बिलीव, आई सपोज, आप इन तीनों में से कोई भी एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं. I suppose we need to leave this topic for the time being and move further discussing about ABC thing. We are pushed for time, so now let's talk about this thing. We are pushed for time मतलब हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है, हमारे पास टाइम कम है. We are pushed for time, so now let's talk about this thing. I request everyone to stay on the topic. I request everyone to stay on the topic. अनदर हम्बल वे अपने टीम मेंबर से रिक्वेस्ट करने के लिए कि वो लोग टॉपिक पर रहें एंड दे डू नॉट बीट अराउंड द बुश. बीट अराउंड द बुश मतलब इधर उधर की बातें करना. दे डू नॉट गेट डिविएटेड फ्रॉम द मेन टॉपिक. वो मेन टॉपिक से डिविएट ना हो जाए, रास्ता ना भटक जाए. तो आप उनकी अटेंशन को वापस लाने के लिए कह सकते हैं आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू स्टे ऑन द मेन टॉपिक. दिस मैटर इज़ नॉट ऑन टुडेज एजेंडा. लेट्स लीव इट फॉर द नेक्स्ट मीटिंग. Sometimes you will see group members, they have their own concerns and they always try to bring those matters up in the meeting. So you can calm them down, you can tell them that see, understand, this is not the matter to discuss in today's agenda. So we will have your concerns, all the problems and concerns or ideas will be heard, but in the next meeting, because for now we are pushed for the time and we already have a lot to cover. हमारे पास इस मीटिंग में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं कवर करने के लिए और हमारे पास टाइम कम है. वी आर पुश्ड फॉर टाइम. सो लेट्स सेव ऑल दीज क्वेश्चंस फॉर द नेक्स्ट मीटिंग. आई हैव समथिंग टू ऐड ऑन. I have something to add on. So let's say there is already a topic rolling and everyone is putting forward their opinion on that particular topic. और आपको बैठे बैठे खुद भी बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं कि मैं इस चीज़ को ऐसे हम बेहतर कर सकते हैं. तो अपना आइडिया बताने से पहले यूज़ दिस सेंटेंस स्टार्टर एज या आई हैव अ पॉइंट टू ऐड ऑन और आई हैव अ सजेशन टू मेक. आई हैव अ पॉइंट टू ऐड ऑन, I have a suggestion to make और I have something to add on. मतलब मेरे पास कुछ है जो मैं ऐड करना चाहता हूँ आपके इस डिस्कशन में या फिर इन सजेशंस में. I have something to add on. Excuse me for interrupting. मुझे क्षमा करें इंटरप्ट करने के लिए, but I cannot hold my horses and I have to tell you what I'm thinking about. आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके पास एक बहुत अच्छा आइडिया है और आपको इसको अभी शेयर करना है. एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ द बेस्ट अप्रोच. नेवर वेट कि जब सब चुप हो जाएंगे, जब सब खत्म हो जाएगा मैं तब बोलूँगा या मीटिंग के बाद बोलूँगा. दिस इज़ योर टाइम, दिस इज़ योर अपॉर्चुनिटी. डू नॉट लूज इट बिकॉज द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ इन अ मीटिंग हैज़ अ लॉट टू डू विद योर करियर ग्रोथ. अगर आप अपना यू वांट टू क्लाइंब अप द करियर लेडर, आप करियर की लेडर को क्लाइंब करना चाहते हैं, तो मेक मोस्ट ऑफ ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी. इफ़ यू हैव एनी आइडिया विच यू थिंक इज़ वर्थ शेयरिंग, डू शेयर इट विद द ग्रुप मेंबर्स. तो आप आराम से पोलाइटली कह सकते हैं प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर इंटरप्टिंग.
Please excuse me for interrupting. I could not follow you. Could you please elaborate on this term? I couldn't follow you means I could not understand what you were trying to say. मतलब आप जो कहना चाहते थे मैं उसको follow नहीं कर पाया. I missed you maybe because my understanding didn't allow me to go with that pace. मैं समझ नहीं पाया कि आप क्या कहना चाहते हैं. तो आप कहें I'm sorry I could not follow you. Could you please elaborate a bit on it? क्या आप इस बात के ऊपर थोड़ा elaborate, थोड़ा सा बढ़ा के बताएंगे? Could you please elaborate on this term? Okay, so it is again very important. If you do not understand something, do raise your voice, because if you don't understand it now, you will not understand it even after the meeting. And if you don't understand, you will not be able to make active participation. तो अगर आप एक्टिवली मीटिंग में और मीटिंग में लिए गए डिसीजंस पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मेक श्योर आप सब कुछ समझ रहे हैं. अगर आपका कोई भी आइडिया है तो आप उसको प्रॉपरली एक्सप्रेस करें, और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप उसके अराउंड क्वेश्चंस करें. यू नेवर नो व्हेन योर बल्ब गोज ऑन एंड यू मेक अ फैंटास्टिक पॉइंट विच इम्प्रेसेस एवरीवन. So, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? What are your views on this? Mr. Sharma, what are your views on this? I completely agree. I completely agree. मैं बिल्कुल सहमत हूँ. आपको पता है आप क्या मिस्टेक करते हैं? आप लिखते हैं I am agree. This is grammatically wrong. It's not I am agree. आप कहेंगे मैं सहमति करता हूँ. Simple present tense के अकॉर्डिंग I agree. या फिर आप इसको I am agreed करके कहें. I am agreed. There is no term as I am agree. Okay, it is grammatically wrong. So you will say I completely agree. I cannot agree enough. I cannot agree enough मतलब मैं इतना agree करता हूँ कि उसके बाद और agree करने का scope ही नहीं है. In simple language, you 100% agree with the person. If no one has something else to discuss, let's move on to the another topic. अगर किसी के पास कोई भी चीज़ नहीं है डिस्कस करने के लिए, if no one has any another point to make, if no one has anything else to add, let's discuss this. Please correct me if I'm wrong. Please correct me if I'm wrong. Such a lovely expression. आप इसे कब यूज़ करेंगे? जब आपको पता है कि आप गलत नहीं हैं पर फिर भी आप कोई स्कोप नहीं छोड़ना चाहते दूसरे बंदे को नाराज़ या फिर गुस्सा करने का. तो आप उन्हें कह रहे हैं कि ओके आई बिलीव और आई सपोज दिस इज़ हाउ इट हैज़ टू बी डन and these are the changes we need to make because of this and this reason, and after you have explained all your idea, then you could say please correct me if I'm wrong. Please correct me if I'm wrong. Or it could be a very nice way of showing disagreement. Okay, so when a topic is being discussed, everyone comes up with their own ideas. They have their own beliefs that why this is good or why this is bad. So at that time, if you want to show your disagreement, आप ये कहना चाहते हैं कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ. So instead of saying no, I do not agree, which is really not at all appropriate, you can first tell your idea. You could first share your opinion that what makes you believe that this is right or wrong, and then at the end you can add, please correct me if I'm wrong. Please correct me if I'm wrong. Could you please paraphrase what you just said? Could you please paraphrase what you just said? Paraphrase means to explain the term in a simpler manner using very simple vocabulary words. तो अगर मीटिंग में कोई ऐसी टर्म यूज़ होती है जिसका आपको मीनिंग ही नहीं पता है तो आप स्पीकर से कह सकते हैं सर आई रिक्वेस्ट यू टू पैराफ्रेज दिस टर्म फॉर मी. सर वुड यू प्लीज़ पैराफ्रेज दिस टर्म फॉर मी. Paraphrase means to break it down using simple language so everyone could understand it well. When meeting comes to an end, it is your responsibility to ask if anyone has some another ideas or suggestions to make. तो ये पूछने के लिए आप इंग्लिश में कहें Would anyone like to make any final point? Would anyone like to make any final point, or should we call it a day? Call it a day means should we just consider that this much is enough for today? So does anyone has any another point to make, or should we call it a day?
If there are no further points, I would like to bring the meeting to an end. अगर और further points नहीं हैं तो मैं इस meeting को end पर लाना चाहूँगा, मतलब we will just call it off कि इतना बहुत है. So if there are no further points, I would like to bring the meeting to a close, or I would like to bring the meeting to an end. Before you close the meeting, it is your responsibility that you sum up that what all points you have discussed. So people have a quick revision what all points they have discussed, what are their responsibilities associated with it, and what actions they are required to take. So you can say, before we close the meeting, let's quickly sum up all the key ideas. Before we close the meeting, let's quickly sum up all the key ideas. मतलब जितने भी key ideas discuss हुए हैं उन्हें फटाफट से हम सम अप करके डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप सब सेम पेज पर उन्हें याद रख पाए. ओके, आई अप्रिशिएट एवरीवन्स पार्टिसिपेशन एंड आई मस्ट से दैट यू ऑल हैव बीन वेरी एफिशिएंट इन टुडेज मीटिंग. तो आप मीटिंग क्लोज करने से पहले जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उन्हें एक्नॉलेज करें ताकि नेक्स्ट टाइम आप उनकी साइड से इनपुट्स लेने के लिए उन्हें रेडी कर रहे हैं. ओके, आप यू आर मेकिंग श्योर कि जब नेक्स्ट टाइम मीटिंग होगी दे विल बी रेडी विद देयर एक्सीलेंट आइडियाज. सो यू टेल देम, ओके, आई थिंक वी ऑल हैव बीन वेरी एफिशिएंट टुडे. We all have been very efficient today and I truly appreciate everyone's participation. मैं हर पर्सन का इस मीटिंग में पार्टिसिपेशन को अप्रिशिएट करता हूँ एंड आई मस्ट अप्रिशिएट एवरीवन्स participation in today's meeting. So this is a wrap up, okay, or you could say, so let's wrap up. Hey everyone, could I have your attention for one more moment please? Could I have your attention for one more moment please? It is very obvious, you know, when you make all the points there is always something which is left to be discussed. तो अगर आपको लास्ट में याद आता है कि ये पॉइंट डिस्कस नहीं हुआ है तब आप कहें, hey everyone, I would like to have your attention for one more moment please. I forgot to mention or I forgot to inform you, I forgot to discuss this thing. Could I have your attention for one more moment please? Hey everyone, could I have your attention for one more moment please? The thing is, I forgot to mention, the thing is, I forgot to tell you, the thing is, we forgot to discuss XYZ thing. Before you go, let's put our hands together for Mr. Sharma. Before you go, let's put our hands together for Mr. Sharma. Meetings में या फिर teams में, you know, there is always this one person who goes extra mile to impress the manager. वो हमेशा कुछ ऐसा करना चाहता है कि उसका मैनेजर उससे हमेशा खुश रहे. तो मैनेजर ऑल्सो, यू नो, ही गिव्स हिम क्रेडिट फॉर दैट. तो और अगर आप ही वो मैनेजर हैं कि आपको लगता है कि कोई एक टीम मेंबर ही इज़ ऑलवेज ऑन टाइम, ही इज़ ऑलवेज रेडी विद द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस, ही इज़ ऑलवेज रेडी टू गो एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प यू आउट. गोइंग एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प यू आउट मतलब अपने रास्ते से दूसरे रास्ते जाकर आपको हेल्प करना. तो यू कैन appreciate the person saying, or you could acknowledge his efforts at the end of the meeting. Say, hey everyone, before we leave, let's put our hands together for Mr. Sharma, for this candidate. If anyone has a suggestion to make or a feedback to deliver and you would like to make it privately, please feel free to email me at oceanenglishacademy@gmail.com. Okay, so there are few introverts in the meeting, and you know that no matter how much you urge, how much you insist, they will not speak up their mind. So to encourage these people or to ask for their participation in the meeting, you can tell them. So you can also tell these people that if they have any suggestion or a feedback to deliver, they can write you an email, okay? And you will look into the issue. Don't you think this much is just more than enough? Even I'm tired now. Okay, so let's call this meeting off now, and I'll see you tomorrow with the next video and present you some beautiful vocabulary expressions. All the best.